स्ट्रेस लेवल बढ़ता गया। मैंने सब कुछ खो के वापस खड़ा किया। क्वॉकी ने इतने सारी चीजें दी, सारा को सारा चिन दी है। द ओनली रॉक आई हैव ऑन माय फिंगर्स आर माइन। ही इज नॉट अ फ्रेंड एनीमोर। मैराथन भागती गई। आज मैं कुछ और ही कर रही हूँ लाइफ में। आई शुड नेवर से मेरा रिलीजन क्या है। मेरे बच्चों में तो बहुत नेचुरली अकड़ आई जाएगी। Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to another video. आज के वीडियो के लिए हम चटपटे क्वेश्चंस आंसर करेंगे and unfiltered, raw, real Q&A from the recent post that I put on my community. Every time I post on my community, आपको इतने सारे questions होते हैं और इस बार मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी. I am in a much better place mentally. I feel like I can take on a lot of what is thrown at me from the internet and I can answer everything very clearly. I've got my Impulse's guilt-free iced tea, but nothing about this Q&A is going to be guilt-free. It's going to be absolutely spicy, saucy. And if you want to go grab your beverage, go grab your Impulse coffees, go grab your Impulse iced tea if you have already got it. By the way, guava chili iced tea is already sold out in pre-order. Strawberry के अभी भी थोड़े से बचे हुए हैं, पर जब तक आप ये देख रहे हो, हमने assorted pack भी launch कर दिया होगा. So you also have our assorted iced teas in stock, absolutely guilt-free. And if this is the first time you come on my channel, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि मैं कौन हूँ, then hi, I'm Sara. I make beauty and lifestyle videos here on YouTube. I also have a brand Impulse coffees, and if you are new here, you should definitely try it out and subscribe to my channel. Please आके देख के बिना subscribe किए मत जाना. Hit that subscribe button, click on the bell icon next to it so that you're notified when I upload a video. And with that, we can dive straight into this. Okay, then let me take a sip of my iced tea. The iced tea just hits all the right spots. Okay. पहला क्वेश्चन आई वांट टू एड्रेस, क्योंकि थोड़े सारे क्वेश्चंस इसके बारे में इसीलिए आए हैं बिकॉज आई पॉप्ड दिस पिक्चर ऑन माय कम्युनिटी पोस्ट एंड ऑफ कोर्स माय थिक थाइज एंड माय थिक आर्म्स आर ऑन फुल डिस्प्ले, सो देयर इज अ लॉट ऑफ बॉडी शेमिंग दैट केम विद इट. अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि इतना वेट बढ़ाने के बाद हाउ डू आई कैरी माई सेल्फ, मैं स्लीवलेस पहन सकती हूँ, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस कैसे है और मेरा वेट बढ़ कैसे गया इतना ज्यादा, स्पेशली क्योंकि मेरा वेट घट गया था इन 2024. सो लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर. इन 2023 आई मेट यश पटेल, दैट इज आस्क नेचुरल, जिनके साथ मैंने उनका न्यूट्रिशन प्लान स्टार्ट किया एंड दैट डेफिनेटली हैज बीन लाइफ चेंजिंग मेरे लिए. उसके न्यूट्रिशन प्लान पे जाने के बाद से बहुत कुछ मेरे लिए बदल गया. लाइक स्किन गॉट बेटर, माय फैट स्टार्टेड घटोइंग लाइक दिस बिकॉज इन हिज न्यूट्रिशन प्लान बेसिकली आई कट डाउन ऑन शुगर कंप्लीटली एंड आई ऑल्सो कट डाउन ऑन कार्ब्स कंप्लीटली. नाउ आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ ईटिंग कार्बोहाइड्रेट, जब मैंने झट से छोड़ दिया ना, तो माय बॉडी वेंट इनटू फैट बर्निंग वेरी फास्ट. आई वाज आल्सो वर्किंग आउट 4 to 5 times a week, बट वर्कआउट मेरा कभी कभी छूट भी जाता था. That's okay, but my body was very nicely burning fat. I started in November 2023 and I continued with his plan all the way till November 2024. Okay, 1 year I lost weight beautifully. I lost 10 kgs and मैंने काफी ज्यादा मसल भी गेन किया उस एक साल में and मैं बहुत अच्छी दिखने लगी थी. I was chiseled, all my jeans had become loose, my pants had become loose. I was very happy. My skin had become clear. My PCOS was fixed with this nutrition plan and I was extremely happy. But now something shifted in November 2025 and that is I went on 2 to 3 trips back to back. तो ये एक साल में ना मैंने ज्यादा ट्रैवल नहीं किया था और क्योंकि मैं घर में थी ना, घर पे डाइट फॉलो करना बहुत इजी होता है और मैंने ट्रिप्स लिए थे बट इतने लंबे ट्रिप्स नहीं लिए थे. नवंबर में आई टुक 3 ट्रिप्स बैक टू बैक. मैं यूएस गई 20-25 दिन के लिए, फिर उसके बाद मैं मेघालय आसाम गई थी 20-25 दिन के लिए और उधर से आने के बाद भी इन दिसंबर आई थिंक वी वेंट टू अंडमान अगेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या वी वेंट फॉर स्कूबा अगेन इन दिसंबर और जैन एंड आई वाज बैक टू बैक ट्रैवलिंग एंड आई वाज गोइंग टू प्लेसेस वेयर इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू स्टे ऑफ कार्ब्स बिकॉज यूएस is very heavy on burgers, pizzas, donuts. I was eating all of that. When I went to Assam, I go to Reed's house, I ate a lot of rice. And then जब मैं जनवरी में अंडमान गई थी तो हम स्कूबा डाइविंग गए थे. स्कूबा के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो वापस I was eating very heavy carbs. When I went off his nutrition plan, somehow I was never able to come back on it. I was cutting down on sugar very consciously when I was at home and I was eating no sugar foods, but carbohydrate हो ही रहा था यहाँ वहाँ कैसे भी. और मेरा मतलब वो एक जो होता है ना डाइट करने का वो टॉलरेंस, वो भी चला गया था. और फिर अप्रैल के बाद से मैंने 2025 में अप्रैल के बाद से मैंने बहुत ज्यादा अपने बिजनेस पे फोकस करना शुरू किया. उसकी वजह से ना मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता गया. एंड नाउ वन थिंग अबाउट स्ट्रेस इज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हार्मोन. स्ट्रेस कॉजेज कॉर्टिसोल स्पाइक एंड कॉर्टिसोल ने ना सभी कुछ बिगाड़ दिया है. लाइक दैट कॉजेज फैट रिटेंशन सो क्विकली इन माय बॉडी. सो इवन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल आई वाज नॉट लुकिंग वेरी फैट बट आई वाज लाइक गेनिंग वेट बट आई वाज नॉट लुकिंग फैट. आई अगेन started gaining around April
अप्रैल मेरा 82-83 kgs हो गया था, बस मैं 77 पे आ गई थी, उधर 82-83 हो गया। आई वाज लाइक ठीक है मैं वापस कर लूंगी, वो वापस कर लूंगी वाला एटीट्यूड दिमाग में था, बट आई वाज नॉट एबल टू implement it. And from April I became so focused on scaling impulse coffees that my stress kept increasing. My pressure was very high. I was self-inducing a lot of pressure on myself and I was performing at my maximum, which didn't allow me to focus on my body. And with that high stress level you do retain a lot of fat. फिर आप कुछ भी खाओ ना तो स्ट्रेस में वो फैट बन जाता है। मैं सोती नहीं थी सही से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी थी एंड वो सब आके फटा जब मेरे वेयर हाउस में फायर हुआ। When the warehouse fire happened, that was the ultimate. Then my stress तो exploded like a volcano. I was not after that ever able to focus on my body again. I was in fact from November when the fire happened to I would say till my birthday in January 2026 ये साल I was in firefighter mode, like literally firefighter mode. मैं 5 दिन में वापस बिजनेस में आ गई, मेरी पूरी वेयर हाउस में आग लगी थी एंड मेरा सब माल जल गया एंड उसके बावजूद मैं 5 दिन में बिजनेस में वापस आ गई। सो इट लुक्स वेरी ग्लोरियस ऑन द आउटसाइड बट इंटरनली आई नो कि मैं पूरी फट चुकी थी। लाइक माई स्ट्रेस लेवल वॉज बियॉन्ड पीक। आई वॉज very worried and I was like working on instinct and impulse and I was not able to care for myself or even think or calculate an outcome which belonged to me. I was not my priority, only my business was my priority and इतना मैंने prioritize कर दिया, इतनी मैं firefighter mode में चली गई कि मैं जैन तक उसमें से निकल ही नहीं पाई, which is why on my birthday, if you've seen my birthday vlog, you know कि मेरा पूरा mental breakdown हो गया था and that was mainly because we identified that with my therapist that I never came out of that fear, anxiety and वो एक जो डर बैठ गया था वेयर हाउस फायर के बाद मेरे अंदर, वो निकला ही नहीं था। वो डर में ही मैं काम कर रही थी और मैं इतना डर में काम कर रही थी कि मैं वो डर निकाल नहीं पा रही थी और उसकी वजह से मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई था। सो आई स्टार्ट टेकिंग थेरेपी इन जनवरी एंड विद थेरेपी इट्स रियली हेल्प्ड मी understand coping mechanisms, overcome and heal from that fire incident, set systems in place in my business जो मुझे help करे mentally भी over burnout नहीं होने के लिए and हर चीज़ में structure कर पाऊँ, prioritize कर पाऊँ कि मेरे लिए क्या important है क्या important नहीं है and वो डर अपने आप से निकाल पाऊँ। क्योंकि जब इतनी बड़े हादसा आपके साथ होता है ना तो you completely lose yourself, right? When such a big incident happens, I didn't show it on camera that I really did lose a part of me when that fire happened in the warehouse. You think I was working so hard towards that business from April to November and just when I started scaling impulse I lost everything. So वो मैंने सब कुछ खो के वापस खड़ा किया है। तो मैंने इतना कुछ खोया ना नवंबर लास्ट ईयर में, अपने आप को, मेरे माल को, मेरे धंधे को, सब कुछ। I lost everything and I had to rebuild so quickly that I was very stressed and of course that stress has impacted my body and I've gained weight again very much on every part of my body, my thighs, my abdomen, my arms, my face, सब कुछ वापस आ गया। But I am not like harsh on myself about it. I don't have body image issues alhamdulillah and so I can wear sleeveless, I can wear a short skirt. I have never had body image issues like that because I know I'm doing the best I can for myself. Every day I show up. मैं जब वर्कआउट कर सकती हूँ मैं करती हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं अपने आप को डंडे लगाती हूँ कि नहीं 5 टाइम जाना ही है या 75 डेज में मुझे ट्रांसफॉर्म होना है। मतलब 75 डेज के बाद का जीना नहीं है आपको जिंदगी में। ऑफ कोर्स यू हैव टू लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ एंड आई वांट टू ट्राई माय बेस्ट टू डू दैट। सो आई स्टार्ट टेकिंग थेरेपी से मैंने अपने आप का पहले मेंटल हेल्थ, मेरी एंग्जाइटी वगैरह वो सब कम किया। जो भी जनवरी में मेरे बर्थडे पे मतलब मैं फटी, उसके बाद आई न्यू कि अब आई नीड हेल्प, आई genuinely need help and I seeked help. I got therapy. I fixed my mental health first and then after that when I started feeling better mentally I could decide that okay now I'm ready to go back on Yash's plan. So I'm back with Ask Natural, like fixing my health again because already his plan has worked for me in the past. I know कि उसके plan से I can beautifully lose fat and fix my PCOS and everything. So I'm back on his plan and with PCOS कैसा है ना, वो कभी भी आपका ठीक नहीं होगा। Once you have PCOS you always, it's a lifestyle disorder. आप जैसे ही lifestyle खराब करोगे आपका वापस खराब हो जाएगा सब कुछ। तो अगर आप सही से सोओगे, स्ट्रेस कम लोगे तो आपके हार्मोन्स अपने आप फिक्स हो जाएंगे। सो नाउ दैट माय स्ट्रेस इज लेस एंड आई कैन स्लीप बेटर। आई वाज आल्सो हैविंग नाइटमेयर्स आफ्टर द वेयरहाउस फायर। आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ नाइटमेयर्स। आई वाज नॉट स्लीपिंग वेल। तो मुझे बुरे सपने आते थे, मैं डर जाती थी, मुझे बहुत एंग्जाइटी होता था। मुझे इतना एंग्जाइटी होता था ना कि मुझे कोई कुछ बोलता भी था ना तो मैं डर जाती थी एंड पीपल वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट अराउंड मी। माय टीम वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। सडनली आई वाज वेरी हाइपर ऑल द टाइम एंड इवन माय पार्टनर Reet was not able to understand. Reet actually has been the most understanding throughout all of that because he was the one who identified that since November I've never come out of that zone only that I went inside in November. So he was the one who identified what has happened and put me into therapy. But my parents were not able to understand, my team was not able to understand and I was not able to understand most importantly. But now alhamdulillah I'm a lot better. Therapy does genuinely help and I'm going to continue seeking it for a little longer जब तक मुझे खुद वो कॉन्फिडेंस नहीं आया। और अब मैं आस्क नेचुरल की प्लान पे बस 2 महीने से ही गई हूँ। So January, February I started therapy and 22nd March I started this plan again. So just now I've
started again and I'm again very strict about my diet. So I will start seeing results inshallah very soon. And I will lose weight again, because losing weight is not the only life goal. There are so many other things that happens in life also, and you have to cater to all that too. What is more important amongst all of this is that I'm healthy, I'm alive, and I'm kicking. I'm still kicking. So it's very easy to body shame someone. जब आप body पे fat देख लो या मुझे short skirt में देखो और बोलो कि अरे वो कैसे short skirt पहन सकती है जब वो इतनी मोटी है. But वो मोटापे के पीछे इतनी ज़्यादा स्टोरी थी, and सबकी होती है. Body positivity is about allowing people to live and still work on themselves. It's not about accept. I'm not never accepting कि मैं मोटी हूँ तो मैं मोटी रहूँगी, ठीक है, मेरे को genetic problem है, ऐसा कुछ नहीं है. I'm not accepting that I'm gonna work on myself and I'm going to get fitter and I'm very conscious. I'm a very self-aware person. मैं कर लूँगी. बस ये सब हुआ and I want to tell you all कि अगर आपकी भी लाइफ में स्ट्रेस है तो आप कितना भी हेल्दी खा लो, वर्कआउट कर लो, कुछ भी कर लो, अगर स्ट्रेस is the prominent emotion in your life, you will never lose fat. You will genuinely never lose fat. You have to work on your stress levels and get them down first. Now, a lot of actually mental health questions भी थे कि how did I manage stress when I had a panic attack on my birthday and वो सब. तो ये सब भी मैंने उसी में आंसर कर दिया है कि ये सब कुछ correlated था. Everything was correlated. My weight gain, my stress level and मेरा panic attack birthday वाला सब कुछ. Now next is, do you think YouTube friendship is a thing for you or it's just work related meetup and formality but not bonding like usual best friends do? Do you have any YouTube best friend? I think YouTube best friends which I have from 2021 से जो मेरे friends बने हैं वो आज भी I would say they are YouTube friends / YouTube best friends, and those are real friendships. I genuinely don't get the same energy from new age creators. I don't know, I'm not very like when I go to events, जब मुझे new age creators मिलते हैं मुझे पता नहीं, I sense a certain attitude and a certain cold behavior from the newer generation of creators, and they might have more followers than me because मेरे Instagram पे इतने followers नहीं है, तो they might have more followers than me. I don't know what, like think that I am cold or I am this, but even if I'm smiling at someone, I don't see them smile back at me, and I've had certain experiences like this because recently मैं बहुत events में गई हूँ जहाँ मेरे पुराने friends नहीं है but मैं हूँ और नए generation के creators हैं. But मेरे जो पुराने set of creator friends है, I think they definitely are a friend group that we've all grown together, matured together, and are very much together. Like Quirky is one of my very close friends, alhamdulillah, in today's time. Shalini is a very very good friend of mine from the beginning. हम सब actually, सिर्फ मैं नहीं, हम सब social media पे इतना डालते नहीं है. Like आदिति रात को मेरे घर पे आती है, पड़ी रहती है. शालिनी रात को मैं उसके घर पे उसको ड्राइव पे लेके जाती हूँ. हम ये सब चीजें व्लॉग नहीं करते, स्टोरी पे नहीं डालते हैं. ये सारी चीजें लोगों को ऐसा लगता है कि जब डालो तो ही कुछ होता है. जैसे अभी क्लिनिक के इवेंट पे शालिनी एंड सैम केम लेट and I had already come early and I was done with the event. So after a point, like they were taking pictures and I left. So I barely got any pictures. I didn't get any pictures with them actually. Even at the Plum event, they had come early and I went late and we were chilling so much together, but we forgot to take pictures together because it's like you're not only there to take pictures, you're also there to meet friends. And they had other plans after that, and we all, like the old YouTube group like Mridul Adume and Quirky, Ishan and Gopali, Pari, all of us, we went for dinner because we were celebrating Gopali and Pari just getting engaged. So Janvi was there, everyone was there, and we had this huge family dinner. Like that was so good. We went at 7:30. हम 2 बजे रात को रेस्टोरेंट से निकले, तो it was so wholesome. हम सब साथ में इतने टाइम बाद थे, इतने गप्पे लड़ाए, इतना मजा आया. And that was in a vlog. I think vlog में भी अगर आप देखोगे, only 30 seconds is that whole dinner. 30 seconds to 1 minute is the dinner, but we spent 5 hours together. So that's the kind of friendship I have with the older YouTube creator community, and I don't feel that same connection today. So today's generation, I don't know कि मतलब कैसे friendships होते हैं, तो मैं थोड़ी दूर ही रहती हूँ. और मैं ऐसा मुझे कोलैबोरेशन वगैरह करने भी अभी पसंद नहीं है, क्योंकि YouTube कोलैब करो ना तो I feel like more than anything झगड़े कमेंट सेक्शन में हो जाते हैं, and comments try to pit you against each other and stuff. Like अभी Quirky और मैंने भी mystery box किया, हमारे इंटेंट अलग थे, हमारा टॉपिक अलग था, हर चीज अलग थी, बट पीपल वर लाइक अरे Quirky ने इतने सारी चीजें दी, सारा को सारा चिंदी है, सारा को बस पैसा है तो भी वो देती नहीं है, and all that. And I'm like wow, that is absolutely core like unrelated because I made her a Mumbai mystery box and she made me a Delhi mystery box. But comment section makes you pit against each other, and this used to happen a lot when Mridul and I used to collaborate back in the day also, that if I would make her something like an outfit or a mystery box and she would make me, so people would only compare us and create like fights between us in the comment section, which was not actually there but it was in the comment section. So this is all like controversy and वो कुछ gossip create करने की कोशिश करते हैं लोग. तो that's why behind the scenes, like when I saw those comments, I first asked Aditi, are you okay? Did you like things? Did you use them? And she was on some island vacation and she was carrying half the things I gave her in the mystery box. So she was like, bro, just ignore. That's the thing, the equation we have as creators. I love the equation we have, and ये सारी friendships genuinely friendships है,
है, genuine friendships है. बाकी की I cannot tell about everybody. Even Disney cruise पे, you know, Disney cruise पे इतना मजा आया. There were a lot of creators who were older and like have been creating content from very long, but I'm not like very close friends with. But we made so many nice friendships on Disney cruise. Like Shiv Shakti and I spent so much time together on the Disney cruise, and we bonded so well. Sass thing, Michu, that's Soumya Gupta if you don't know, and so many I can't even remember names. But ये सारे लोग जो भी है ना, वो लोग भी बहुत टाइम से क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट, बस मैंने उनके साथ इतना टाइम नहीं स्पेंड किया. तो शिप पे तो बहुत मजा आई. सो आई वुड से देयर इज अ डिफरेंस इन व्हेन you've been doing this for a very long time versus if you've gotten quick success. There is a difference in those two parameters जिनको आप मिलते हो in person. You're in a space where the highs are very high and the lows can be quite intense, sometimes even isolating. How do you maintain balance through all of that beyond family, friends or your partner? What keeps you grounded and helps you push through the tough days? I would say my friends, family and my partner do keep me grounded, because at the end of the day what matters is having your people around you whom you love and they're still healthy and hearty. So while the career can have intense highs and intense lows, I don't celebrate my highs anymore. I don't even moan on my losses anymore. If you'll see, I don't even remember the last time I celebrated a milestone. I think मेरा 1 million हुआ था YouTube पे, तभी हम इगतपुरी गए थे. That was the last celebration I ever did for my career. After that, even when I came from Cannes Film Festival, everything, like मैंने कुछ भी career का milestone celebrate नहीं किया. I don't take my highs very high and like मैं आसमान में नहीं उड़ती हूँ उनके साथ. और ना ही अगर मेरे साथ नुकसान होता है तो मैं रोने बैठ जाती हूँ. Like मैंने कितना खोया है लाइफ में, कितना आपने ही देखा होगा, कितनी मेरे साथ मैं ट्रैवल करती हूँ, मेरे साथ चोरियाँ होती है, मेरे नुकसान होते हैं, धंधे में नुकसान होते हैं, कितना लॉसेस होता है बिजनेस में. My tennis bracelet got robbed in London when I was there. I didn't cry at all. I don't cry over losses and I don't celebrate highs. I just stay grounded and neutral because this is life, you know, this is life. This is how life is going to be. And yeah, I am in a very high pace environment. I'm constantly dealing with very expensive things. I'm dealing with a lot of intense pressure. Like the stakes are very high in what I do and it's going to be like that. So when I want to stay grounded and I need to stay balanced, my partner, my family and my friends, they are the ones who keep me that way. Are you married? Then whose child is that going to Nani house? Please pick my question. I am not married. Even in the recent story, I think मस्ती में मैंने रीत को husband बुलाया था. वो हमारा running joke है where we like I call him husband or pati and like ऐसी हमारा running joke है. तो वो randomly मैंने story पे भी डाला था. That doesn't mean that we are married. The only rock I have on my fingers are mine. This is given by him, but this is all me. So we are not married, but we are a couple that we are together, right? So वो running joke है हमारा that मैं उसको पति वो बनाती हूँ और हमारा बच्चा तो definitely नहीं है क्योंकि I don't remember the 9 months I must have disappeared from social media. If that happens, then you can speculate that. But the child that goes to Nani's house is probably Ishan. That is my nephew that you must have seen, but yeah, not my child. And when am I getting married to Reet? It's again not happening anytime soon. Everyone's getting married around me, and everyone means I'm not even saying influencers. I'm saying मेरे college में जो मेरे juniors थे उनकी शादियाँ हो रही है. Like Pooja and I sent that to each other. It's like, are we missing out on something? Because like my friend group, my age group, none of us are interested to get married right now. None of my friends are getting married. All of us are so like into our careers, and so are our partners. None of us, my best friends and I, none of us come from family wealth. तो हमको हमारी शादियाँ ना खुद से करानी है, like खुद खर्चा करके करनी है. तो we are like पहले पैसा कमाए, बचाए, फिर शादी करे, उससे शादी के बाद की जिंदगी के लिए भी पैसा चाहिए. तो it's all a financial decision. I swear to God, like all of us want to get married when we can fund our weddings, and so we are all taking our time. We all have partners, but we're all waiting to like have money to fund our weddings, which is why none of my friends are married. But my juniors are also starting to get married, so it does feel like the clock is ticking or something. But no, we've realized it's social pressure and it's not actually a problem. As a 22-year-old who is doing her MBA with a dream of starting my business from scratch, looking at you for inspiration, what advice will you give? I think MBAs are most important to also make contacts and connections. That's very important more than your degree. जो लोग आपको वहाँ मिलेंगे MBA में, आपके professors, आपके connections, आपको जब placement मिलती है, जो लोग आते हैं, those connects are going to be more valuable if you're going to build your business. Business is all about having the right contacts, right connections, and I never had that when I was starting Impulse. मेरे पास Impulse का ऑफिस शुरू करते समय कोई business contact, connections कुछ नहीं था, तो वो मैं अभी build कर रही हूँ. तो it's important to use your degree wisely and connect a lot, talk to people. If you have business ideas, pitch them to your professors, see what people think, do a lot of consumer study, कि लोग क्या consume करे, क्या gaps है market में. Do all of that if you want to start a business from scratch, because today's market, there's a business for everything. So what you're building, who is it going to be valuable for? That's very important. So many questions about my mental health, which is so sweet. And
I've already answered that. How did you and Reet meet, when and where? Reet and I have already answered this actually in a podcast because I always wanted to answer the question with him first time on camera. We met through mutual friends and we always knew of each other, but we never spoke to each other, and we spoke to each other for 2 months before we actually met each other in person. But we were already very much in love when we were texting. Texting phase में हम इतने ज़्यादा into each other हो गए थे कि it was dangerous territory. And then we met in person and it was all like solidified, and it was like, I'm just cutting it short and telling you, but that's basically in a nutshell that somebody like me, guys, मेरा attention span इतना बकवास है कि if somebody can keep my attention for 2 months of just texting that person and never having met that person, I was like literally intrigued कि what is even happening. Like, you know, I was so opposed to the idea of love. I had major commitment issues and I would never want to fall in love because I felt all men are assholes and somebody will break my heart. So I used to protect my heart itna zyada कि I never wanted to fall in love. I never wanted to give my heart to anybody. But this Jakharia has wormed his way into my heart with his words, with his actions. He used to call me a lot and he was very respectful of when I was working, and he would talk to me for hours in the night. Like, we would talk for 4 hours in the night. And I used to live with my parents at this time. Like, this is when I was living with my parents. So it was so beautiful the way our journey was during the days we used to talk to each other only. कि जब हम मिले 2 महीना later, which is so again surprising क्योंकि I'm a person who, if I'm liking somebody, I will immediately want to go on a date and do a vibe check. But because Reet was in Assam that time and I was back with my parents, we didn't meet, and then we met for the first time and it was like straight up like a fairy tale, and it was really nice. So that's how we met, and it's been like that ever since. Okay, what happened between you and Amit? Now, this is a topic of hot comments जो बहुत ज़्यादा आए, and I didn't want to answer this because Amit was my videographer for about 6-7 years I think at this point, and of course he was on my vlogs. बहुत लोगों ने उसको देखा है through my videos and know of him as not just my videographer but also a very close friend of mine. There were certain boundaries which were breached, which I was like not comfortable with at all. Like, those boundaries एक बार breach हो जाए तो आप उससे फिर उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हो. आप उसके बाद कोई forgiveness नहीं है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद आपका वो रिश्ता टूट ही गया है. तो वो रिश्ता अब as a friendship रहा ही नहीं है. And of course, if he's not a friend anymore, I cannot work with him also anymore, which is why you don't see him in my vlogs anymore. So it's just, for me, I love a lot and I love very deeply, and I love एक बार बहुत बार सोच के, तो मुझे इतना ज़्यादा प्यार था कि मेरा इतना ज़्यादा दिल टूटा है ना कि अब मैं वो वापस फ्रेंडशिप भी नहीं बना सकती और मैं कुछ भी नहीं कर सकती उस डिपार्टमेंट में. So I'm done there, and I've learned a very big lesson to never again become that close to somebody I'm working with, because I've understood that professional boundaries cannot become friendships, and I've made this mistake way too many times. मैंने बहुत बारी गलती पहले भी की है बचपन में, जब मैंने जस्ट काम करने लगी थी और अपना कंपनी बना रही थी. मैंने इम्पल्स कॉफीज जस्ट स्टार्ट किया था और जस्ट सारा सरोश में भी आई स्टार्टेड हायरिंग पीपल एंड ऑल. आई बिकेम वेरी फ्रेंडली विद देम, वेरी क्लोज टू देम. आई वाज एक्सट्रीमली generous. I am generous, but now a lot of my generosity you will not see in vlogs. A lot of my niceness you will not see in vlogs. Now I'm a very bitch boss attitude on vlogs, and even in person, if like nowadays people like who come to work with me, I am straight up like I am an influencer for the camera and the world, but in office I'm a boss. So there is a very strict boundary that now I keep at work, where like it's a boundary, like you just cannot cross it. It's a personal boundary, and I don't now let any employee cross that personal boundary, which is also one of the reasons I got an office. क्योंकि पहले घर से ही काम होता था तो जाने अनजाने वो boundary breach हो ही जाती है. But nothing, I love the team I work with. Okay, I have massive respect for them as professionals. I'm sure they have respect for me as a professional. They might have frustrations also towards me as a boss, but that's okay. Everything is okay as long as it's work. The minute it's personal और आप दोस्ती यारी में लग जाते हो, फिर मेरी माँ तुम्हारे लिए खाने बना रही है, तुम मेरे घर में कभी भी आ जाते हो, like ये जब दोस्ती यारी में बदल जाती है और फिर तुम दिल तोड़ते हो, फिर तुम कुछ बुरा करते हो, तो जो बुरा लगता है ना, वो मेरे साथ बहुत बार हो चुका है at this point. And now I'm done. Now I'm like, I'm 27. I'm not young anymore. I'm not in my early 20s. I'm not a teenager building a business. Now I'm going to be 30 very soon. I want to build a business with dignity. I want to build a brand that is worth remembering. And I want to build a company that is worth working at for its good culture of working, and not because the boss is your best friend. Yeah, I think I learned a lot of lessons with this friendship
friendship breakup that happened, and I will keep those lessons with me. Hello Saradi, do you sometimes feel lost in life and feel that you've not figured out well in those kinds of situation? What do you do and what keeps you going? You don't wish to do anything, and much love, inspiring as always. I think my answer to this question, जब आपको कुछ मन नहीं करे करने का, एक चीज याद रखना कि जिंदगी मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है. आप जल्दी से भाग के कहीं नहीं पहुंच सकते हो. I always keep remembering that and telling myself that कि अगर आप जल्दी से भाग के कहीं पहुंच गए ना, तो वो बहुत शॉर्ट लिव्ड सक्सेस होगी एंड वो लंबे समय तक नहीं चलेगी. इट्स अ मैराथन, मतलब आपको धीरे धीरे स्लोली भागते रहना है. आप कभी रुक जाओ, हाइड्रेट कर लो, कुछ खा लिया, प्रोटीन बार का बाइट ले लिया, मैराथन में चलता है. इट्स ओके. इन मैराथन एवरीबडी विंस. देयर आई थिंक टॉप 5 or top 10, बट एवरीबडी हु कंप्लीट्स अ मैराथन इज अ विनर. Right? You've completed your 10 kilometers or 5 kilometers. So the goal of life is that life is a marathon. It's not a sprint. So even if you got like, you know, in 10th standard, I was the topper. I got 95.6 in my school. I topped school. I topped my area. Everything. I was a topper. Mahesh tutorials में first आई थी. You know, I was topper. 12th standard में नहीं आया marks. 75 या कुछ आया था. मैं बीमार पड़ गई थी. CET में 140 on 200 आया था मुझे. मैं बीमार पड़ गई थी. मैंने दोनों भी एग्जाम सही से नहीं दिया था. Still got into KEM hospital, जो मेरा ड्रीम था, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ही सही, बट मैं KEM में घुस गई. मैराथन भागती गई. आज मैं कुछ और ही कर रही हूँ लाइफ में. आज मैं यूट्यूबर बन गई हूँ. अब मेरा बिजनेस है. अब यूट्यूब में भी मैराथन भागा. आज मुझे यूट्यूब से इतना दिल नहीं लगता, मुझे कुछ और करना है. अब मैं बिजनेस में मैराथन भाग रही हूँ. तो आप जीवन का मैराथन भागते ही रहोगे, बट अगर आप बहुत जल्दी कहीं भाग के सक्सेस पाने की कोशिश करोगे ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल. सो आई ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर विल बी सम डेज कि मुझे कुछ नहीं करना है, तो इट्स ओके. आई पुट अ लीव इन माय ओन कंपनी. आई एम लाइक, गाइस, आई एम ऑन लीव, इट्स ओके. आई एम गोइंग ऑन हॉलिडे, इट्स फाइन. I take a break. कुछ नहीं होगा. Like I will make a little less money for a few days. That's fine. They can handle it without me. I deserve a break. I'm gonna take it for myself. Anything that happens to me, if I'm sick, I attend to myself. अगर मुझे periods आए and my body saying rest कर लो, मैं rest कर लेती हूँ. तो it's okay to not want to do anything, but always remember कि आप एक life की race में हो, but वो race end तक चलेगी, कभी भी खत्म नहीं होगी. How's life at this age? It's actually really fun. I love being this age where you can actually decide whatever the you want to do, guys. Like I feel like I don't know why everyone's getting married. Like if that's what they want to do, then okay. Like Rita and I discussed this, that we'll never be 26, 27, 28 again. This is the age where we want to do whatever we want to do. Like, you know, he's out there traveling, I'm out there building my business. हम दोनों बहुत दूर है एक दूसरे से, हमें एक दूसरे की याद भी आती है, but we'll never be this age again when we are individualistic and we are building something. एक बार शादी हो गई, बच्चे हो गए, then that's going to be your life, and that phase should also be beautiful. But that phase will be its own phase, and I want to give time for that. So I love this age that we are in right now, where we are making our own decisions, where we are not influenced by each other to make decisions. But I would say there's definitely social pressure, क्योंकि हर एक Q&A में लोगों को जानना है कि मैं शादी कब कर रही हूँ. और अब तो जब हम फैमिली फंक्शन में भी जाते हैं, सब लोग हमको शादी के बारे में ही पूछते हैं. मम्मी पापा से प्रेशर नहीं है, बट रिश्तेदारों से प्रेशर है, ऑडियंस से प्रेशर है, फिर दूसरे लोग शादी करते हैं तो उनको देख के ऐसा पीयर प्रेशर लगता है. बट ऐसे नहीं है. लाइक हमने डिसाइड कर लिया, लाइक दिस इज ऑल सोशल प्रेशर, और हमको नहीं करनी है शादी अभी. एंड लाइफ कैन बी ग्रेट एट दिस एज इफ यू डू व्हाट यू आर डूइंग. मतलब इफ यू वांट टू गेट मैरिड, दैट्स ऑन यू कंप्लीटली. दैट्स योर चॉइस, राइट? दिस इज द राइट एज टू गेट मैरिड इफ यू वांट टू. बट या, इट्स अ फ्री एज, आई वुड से, बिकॉज एट दिस एज, बाय 27, आई होप एवरीवन's making money and you can do whatever you want with your adult money, and it's fun to have adult money. It's also stressful but also fun. How to love my body? I just hate my body. If I see someone skinny, I want to be like them, or if I see someone with curves, I want to be like them, but I want to love myself the way I am. Guys, you'll have to understand that standards of beauty are going to become very unreasonable now, because Ozempic is becoming very the patent is going and it's going to become a common drug like Ozempic, Mounjaro. अभी हर एक जगह बहुत freely मिलने लगेगा, and the day people start abusing this drug, that day you're going to find everyone skinny. All the girls are going to be skinny, and skinny is going to become the new standard of beauty. And in those times, you have to remember that strong is more important than skinny. When you take these drugs which make you lose fat very quickly, you're not losing fat, you can also lose protein, you can lose muscle. And जब आप muscle loss करने लगोगे, muscle build करने सालों चले जाते हैं. इनफैक्ट इन 2 years जो मैं आज नेचुरल के प्लान में हूँ, एक चीज मैंने की हुई कि मैंने बहुत प्रोटीन खाया है, तो मेरे बहुत अच्छे मसल्स बन गए, एकदम तगड़े. लाइक आई कैन लिफ्ट एनीथिंग. लाइक आई डू 45 kgs deadlift, I do 65 kg squats. I am very strong, my muscles are built very nicely. तो अब क्या हो गया मेरी बॉडी में, विथ मसल आई ऑल्सो हैव फैट. सो बिकॉज
because of that I'm starting to look like a weightlifter, but that's okay because I can lose the fat without drugs. आराम से 1-1.5 साल लेके मैं फैट लॉस कर सकती हूँ, बट मेरे मसल तो बन गए. मसल लॉस अगर मैंने अभी Ozempic ली ना, within 6 months I can transform to be skinny, but I will lose muscle which took me 2 years to build. These strong muscles take very long to build. Muscle fibers don't build easily, and इतना प्रोटीन खाने के बाद, being a meat eater, I've eaten so much protein and still it took me 2 years to build good quality muscle. So please focus your goal on being strong, and if you don't love your body, please accept and understand कि जो socially दिखने वाला है वो new normal बन जाए, वो आपके लिए healthy नहीं होगा. Healthy होने के लिए आप workout करो, आप weights उठाओ. Weightlifting is very valuable for women. I have to say this that women think कि walk कर लूंगी बस हो गया, मैं तो घर का काम करती हूँ, मेरा एक्सरसाइज हो जाता है. ये सारी चीजें बोलना बंद कर दो. वेट लिफ्टिंग इज इंपॉर्टेंट. वेट लिफ्ट करने से यू विल फॉर्म मसल्स. इट्स सो गुड फॉर हॉर्मोन्स बैलेंसिंग ऑल्सो. हार्मोन बैलेंस करने के लिए भी वेट लिफ्टिंग इज ग्रेट. तो वेट लिफ्टिंग इज इंपॉर्टेंट एंड ईटिंग राइट इज इंपॉर्टेंट. बाकी आप जैसे भी दिखते हो वो आप बराबर खाओ और वर्कआउट करो, आपका वो फिक्स हो जाएगा. आप सोशल मीडिया पे दूसरे लोगों को देख के बोलना नहीं कि मुझे ऐसे दिखना है, क्योंकि दैट इज टॉक्सिक. दैट यू कैन नॉट फॉर्म, एंड स्पेशली नाउ व्हेन skinny is going to become very normal. I really want my girls out there, you all, to listen to this and understand skinny is not beautiful, strong is beautiful. Every girl needs to aim to be strong. Do you think in the next 2-3 years the social boom that's happening right now, meaning everyone is a creator, will that fade away? Something else is going to come, or will there be a shift? What are your thoughts into it? I already think there is a shift. I wouldn't say कि social boom हो रहा है. In fact अभी तो हम AI के generation में है. A lot of things are being done by AI and a lot of jobs are being replaced by artificial intelligence. Creators का कैसा होगा मालूम है? It won't go completely, but the way creators work will change, and it already has changed. Before it used to be कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं ऑर्गेनिकली अपने वीडियो में आपका प्रोडक्ट डाल दूँ, मार्केट कर दूँ, उससे व्यूज आते थे, कन्वर्जन आते थे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन डाला, उससे क्लिक्स आएंगे, लोग खरीदेंगे प्रोडक्ट. ये सब चीजें वैल्यू करती थी. आज के टाइम्स में परफॉर्मेंस मार्केटिंग आ गया. अभी ये सारे वीडियोस जो अगर मैंने कुछ बात किया, they will take it and they will run ads on it. So that is what they need more than even wanting it on my page, because they want to run ads on my content. So आजकल तो जितने brands के साथ we work, everybody wants boosting rights, because boosting rights has become one new mandate only. Like this is something people want only. So that is one thing which is new that's come. Secondly, Instagram became a lot more than YouTube. तो Instagram का fast pace, short format content वो ज्यादा हो गया, bite sized content. अब AI भी आ गया, तो editing एकदम ज्यादा लगती है. Like पहले हम लोग इतना basic content बनाते थे, मतलब like phone के साथ बात कर लिया, कैमरा के साथ, तो लोगों को वैसे raw real content पसंद था. अभी इतने सारे edit, sound effect, ये वो डाल के वीडियो देना पड़ता है, क्योंकि अभी इतनी सारी सुविधा हो गई है. सबको एडिटिंग आता है, सबने AI सीख लिया, अभी सब बहुत हाई लेवल का कंटेंट बना रहे हैं. द कंपटीशन इज वेरी हाई. सो आई थिंक दोस थिंग्स कीप इवॉल्विंग. द वे मार्केटिंग वर्क्स एंड द वे द डिमांड्स ऑफ मार्केटिंग आर इज गोइंग टू कीप चेंजिंग. इवन ChatGPT is coming up with ChatGPT ads. Not just SEO now, AEO also matters. ChatGPT ads also matter, and lots of such things will happen. I don't think content creators will lose their job. I just think their job will become more difficult and more hard, and to survive will become even harder. What is my monthly income, and am I happy about it? I'm happy about my monthly income. What is it? I'm not going to share, because I also don't know actually. At this point even I don't know how much I make monthly, because there's so many streams of income. So as long as मेरा घर चल रहा है, I'm good. If you go back to 2016, what's the one thing you would like to change? I would not change anything in 2016, because I was still very much in, was I in college in 2016? I was, right? And I loved my college life. My KEM life was the best life I have ever lived with my girls in college. Those were my days. Those were my golden days. I loved it, every day of it. Loved going to college. I loved every part of my college. It was my dream life. I lived it. I didn't do anything with my degree, but I loved my college life. And yeah, I will not change anything about it. शादी के सब questions है bro. सबको शादी करवानी है मेरी. इनको बोलो फंड करने. What changes have you felt after my religious pilgrimage to Mecca? A lot of changes, I would say. My faith got stronger. I just loved belonging to the Muslim community. Like, I don't know, I always growing up felt so disconnected from being a Muslim. Actually used to feel ashamed of saying that I'm a Muslim. I should never tell, like if people used to ask me what's your religion, I should say my mom's a Catholic, my dad's a Muslim. I should never say मेरा religion क्या है. मुझे almost मैं इतनी disconnected थी कि मुझे पसंद ही नहीं था लोगों को बताने कि मैं मुस्लिम हूँ. But when I went to Mecca and in fact like with my Umrah, I have understood the power of Islam, the value of Islam, and my connection with it got so strong. Even before that, when I started reading the Quran in English, it was getting stronger, and then Umrah happened for me. So it got
so strong. I proudly now say I'm a Muslim, and the power of saying I'm a Muslim, I feel it when I say that. Like, my faith is so much stronger in Allah Pak. I've always had faith in Allah Pak, but I think it's just gotten stronger. I also left alcohol, for all the people who don't know. I never said it out loud, but abhi recent vlog mein maine डाला था कि I did quit alcohol after coming back from Umrah. That is one thing I realized, that straight up a sin that I was doing, and anyways it doesn't do any good for my body. तो मैं ऐसे भी इतना नहीं पीती थी. I used to do social drinking like as if it was not a taboo, but now that's also completely like, anyways Reet doesn't drink, and both Reet and I quit alcohol for religious reasons. So yeah, it was life changing. My Umrah was life changing for me. And a lot of people ask, if you have children in the future, will you vlog them or create content on couple based or child based videos, or make your child's own channel? What's your perspective on such type of content? I have a lot of thoughts on such type of content actually. Reet and I have discussed this at length because both of us are content creators. Now even Reet does content creation full time. So we did discuss how we would navigate this, especially क्योंकि मेरा उसका page तो सिर्फ travel है, but मेरा page is lifestyle. I vlog and you do see everyone in my vlogs, whoever is in my life, but I would not make it the center of my life because I know it can be challenging, because a lot of moms do mom content because उनकी जिंदगी उनके बच्चों के अराउंड रिवॉल्व करती है. एक बार बच्चे हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी उनके अराउंड ही रिवॉल्व करती है, स्पेशली स्टार्टिंग के 3-4 साल. तो you have to be around your kids to take care of them. So I realized that a lot of moms do mom content because they have to put some content out there, and therefore they do mom content. I really am working to be in a place where it should not be mandatory for me to put my children out there on the internet, because I genuinely feel like when they'll grow up, I don't know how they'll feel about it, right? I don't know yet. It's a very gray area because I really respect the people who put their children out there, but there's so much judgment that comes anyways to us as adults. And फिर वो अगर मेरे बच्चों के लिए आएगा ना, तो I'm very defensive. Like, I hate when somebody says anything about my loved ones. अगर कोई मेरे mom, dad या मेरी बहन या ईशान या किसी को भी कुछ भी बोलते हैं, मैं सीधा उनको ब्लॉक कर देती हूँ. मेरे बारे में मैं कुछ भी सुन के ले सकती हूँ, बट मेरे लव्ड वंस के बारे में, मैं रीत किसी के भी बारे में मैं कुछ भी सुन के नहीं ले सकती. सो इफ यू से एनीथिंग अबाउट माय लव्ड वंस, आई एम एनीवेज वेरी प्रोटेक्टिव, एंड रीत इज द सेम वे. लाइक, वी आर वेरी प्रोटेक्टिव, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मॉम एंड डैड इंस्टिंक्ट, एंड वी माइट नॉट बी ओके विद पुटिंग आवर चिल्ड्रन आउट देयर एंड लिसनिंग टू पब्लिक क्रिटिसिज्म. सो वी विल फिगर इट आउट ऑफ कोर्स व्हेन द टाइम इज राइट, बट मोस्टली वी विल ट्राई कि ज्यादा नहीं हो. लाइक, ज्यादा तो नहीं दिखाया कि ऐसा बेबी रिवील, बेबी फेस रिवील एंड ऐसे, मतलब एकदम से. लाइक, ईशान का कैसा था कि ही वाज इन माय व्लॉग्स एंड ही वाज जस्ट देयर, एंड ऐसा नहीं. अभी भी if Ishan is there and we have a big family function, only then you'll see Ishan, but I never just vlog what he's doing. और उसकी हरकतें मैं एकदम अपने कैमरा में नहीं डालती, मैं स्टोरीज पे नहीं डालती हूँ, तो मैं नहीं करती क्योंकि वो भी बच्चा है. और you know what we also realize with Ishan is people start recognizing him in school, and his teachers and all start recognizing him in school and asking him, अरे we saw you in Sarah's vlog. तो उसको समझ में आ रहा है कि वो फेमस है, एंड फिर उसके साथ एक बच्चों में अकड़ भी आ सकती है. तो मुझे उसका भी डर है कि मेरे बच्चों में तो बहुत नेचुरली अकड़ आ ही जाएगी, एक्सटेंशन ऑफ आवर पर्सनैलिटीज, और फिर उनको पता चले कि वो लोग फेमस है तो और ज्यादा आ जाएगी. तो ये सब चीजों से हम काफी डरते हैं. तो वी डू डिस्कस दिस एट लेंथ, एंड वी हैव डिसाइडेड दैट हो सके तो हम पूरा ही अवॉइड करेंगे, बट नहीं हो पाए, और इफ माई लाइफ इज रिवॉल्विंग टू मच अराउंड माई किड्स, विच इंशाल्लाह आई वांट इट टू, एंड इफ दैट्स माई लाइफ दैट टाइम, लाइक इन माई लाइफ, नो, विथ माई व्लॉग्स यू सी व्हाट वाज हैपनिंग इन माई लाइफ. व्हेन आई वाज हाउस हंटिंग एज अ यंगर गर्ल, यू ऑल सॉ दैट. मैं कॉलेज गई, आपने वो देखा. मैंने कंटेंट बनाया, आपने वो देखा. मैंने घर बनाया, आपने वो देखा. अब मैं बिजनेस बना रही हूँ, अब वो देख रहे हो. लाइफस्टाइल क्रिएटर में आप जो जिंदगी का पल है वो देखते जाते हो. तो अब जब शादी होगी आप शादी देखोगे, जब बच्चे होंगे आप बच्चे देखोगे. वो तो होने ही वाला है, वो नेचुरल होगा, बट जितना मैं उसका मेन कंटेंट अवॉइड कर सकती हूँ मैं करूंगी. विल देयर बी अ चाइल्ड पेज ऑन इंस्टाग्राम एंड अ कपल पेज ऑन इंस्टाग्राम? एब्सोल्युटली नॉट. बोथ ऑफ अस डू नॉट वांट टू मेक अ कपल पेज और इवन अ चाइल्ड पेज और अ फैमिली पेज. वो तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा. आपने रीत को, हैव यू मेट रीत? नो, इट विल नॉट हैपन. सो दैट विल नॉट, देयर विल बी नो कपल पेज, नथिंग. व्हाटएवर लिटिल कपल कंटेंट you see on my page and my YouTube channel, that's it. Me as Sarah Sarosh, the lifestyle vlogger, the lifestyle you see through my lens is the only lifestyle you will see of my family to be, my family currently and my family to be. And with that, I would like to end this video. I just want to set expectations very straight because I realized in my recent videos, I also got a comment saying अभी vlogs में सिर्फ impulse business यही चल रहा है, हमको ये नहीं देखना, हमको आपकी personal life देखनी है. मेरी personal life में कुछ भी hot and happening हो ही नहीं रहेगा. मेरी पूरी life में पूरा टाइम business ही चल रहा है. मेरे सारे friends abroad चले गए, तो friendship के नाम पे तो कुछ टाइम है नहीं हमारे पास. मेरा
पार्टनर भी असम में रहता है आधा टाइम, तो जब वो आता है जाता है मैं आप लोग को बताती हूँ व्लॉग्स में. आई डोंट लिव विद माई पेरेंट्स एनी मोर. माई पेरेंट्स आर ऑल्सो लाइक माई डैड्स रिटायर्ड सो ही इज चिलिंग डूइंग हिज थिंग. माई मॉम डज Marmated, so you see Marmated, and I'm building my business, so you're seeing that. So you're literally seeing what is happening. I cannot create separate life for you vlog में डालने के लिए ना, तो इसलिए जो मेरी लाइफ में हो रहा है मैं आपको सब कुछ ही दिखाती हूँ. ऐसा नहीं कि सिर्फ इम्पल्स दिखाती हूँ. मेरे इम्पल्स वाले व्लॉग में इधर उधर कुछ और भी हो रहा होगा, बट ऑफकोर्स इम्पल्स ज्यादा होगा क्योंकि आई एम बिल्डिंग अ बिजनेस अलोन एज अ सोलो फाउंडर फ्रॉम स्क्रैच एंड ट्राइंग टू मेक समथिंग, एंड इट्स अ न्यू जर्नी, एंड आई थिंक इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू आर गेटिंग टू सी. इट्स नॉट लाइक अ बिजनेस पॉडकास्ट, बट इट्स एक्चुअल रियल लाइफ रनिंग अ बिजनेस एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो बिजनेस में आती है वो सब मैं आपको दिखाती हूँ. और अगर मैं इवेंट पे चली गई तो वो भी आप देख लेते हो. तो यही आपको मेरे कंटेंट से अभी के लिए तो एक्सपेक्टेशन रखनी है जब तक 5-6 साल बाद मेरी शादी ना हो और बच्चे ना हो, 8-9 साल बाद. इफ यू वांट टू स्टे ऑन द जर्नी प्लीज डू, इफ यू डोंट देन आपकी मर्जी. द बेस्ट थिंग इज दैट आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म. अगर आपको नहीं देखना है ना, आई विल नेवर फोर्स एनीबडी टू वॉच माई कॉन्टेंट और बाय माई प्रोडक्ट. इट्स योर चॉइस completely to decide if you want to buy or not. Okay, for today's video, Saska shout goes to Vonem Sharu. Thank you so much for watching and supporting my channel. If you want to be a part of next video Saska shout out, you know what to do. Hit that subscribe button, bell icon right next to it. Also, comment down below saying hashtag Sarah Squad and a chance part of my next video Sarah Squad shout out. I will see you guys soon. Bye guys. Love.